negative charge, and medium, the soil water, that carries positive charge. This is the basic nature of colloid. Disperse phase and dispersion medium, they will just carry opposite charge. Now question is, clay carries negative charge. This is fine. Now what is the source of this negative charge that that is carried by clay? Clay में negative charge होता है. Now question is, ये negative charge कहाँ से आता है? So at first we will be speaking on the sources of charge on clay. Now see the sources of charge on soil colloids. Soil colloids, in previous class we have discussed that basically two types of soil colloids. One is organic colloid, that is your humic acid, fulvic acid, humin, and inorganic colloid, dominantly aluminosilicate clay. We have discussed that why clays, these are called aluminosilicate, क्योंकि clay इसके अंदर में दो बिल्डिंग ब्लॉक होता है. वन इज सिलिकॉन टेट्राहेड्रा, अनदर इज एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा. दोनों को कंबाइन करने से दिस इज एल्यूमिनोसिलिकेट. नाउ आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, ये लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए. आइसो मींस सेम, मॉर्फस मींस मॉर्फोलॉजी और साइज. सब्स्टिट्यूशन मींस one ion that will be replacing another ion. So if you remember this term in this way, iso means same, more or less same. Morphous means size, that is ionic size, radius, and substitution, one ion will replace another ion. Now in yesterday's class it was discussed that this isomorphous substitution, it occurs according to Goldsmith law 1. Goldsmith law 1, it says that कोई भी मिनरल का अंदर में आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, प्रोवाइडेड दोनों आयन के बीच में सब्स्टिट्यूशन होगा, दोनों आयन का जो साइज का डिफरेंस ये विद इन 15 to 20% रेंज में होना चाहिए. वी ऑल नो दैट आयन का जो साइज है, आयनिक रेडियस है, ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. दो किसी भी आयन का साइज सेम नहीं हो सकता है, देयर विल बी वेरिएशन. And Goldsmith law allows that 15 to 20% variation in ionic substitution size, 15 to 20%. Now in tetrahedral layer, we have discussed in yesterday's class, a silicon tetrahedral layer. In center silicon is there, and in four corner this was oxygen. Now it सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम जो आयनिक साइज है ये 15 to 20% का रेंज के अंदर में है. तो सिलिकॉन दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम. नाउ सिलिकॉन अगर एल्यूमिनियम सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा तो दोनों का अंदर में चार्ज का डिफरेंसेस क्या है? वी ऑल नो दैट द सिलिकॉन +4 एंड एल्यूमिनियम इज 3. दोनों का डिफरेंस इज +1. नाउ जब स्ट्रक्चर में सिलिकॉन था विथ सिलिकॉन 4 चार्ज, टोटल चार्ज मिनरल में 0 था. जब एल्यूमिनियम सिलिकॉन को रिप्लेस किया देन चार्ज टोटल हुआ 3, डिफरेंस +1 हुआ. पहले सिलिकॉन का +4 चार्ज लेके टोटल चार्ज 0 था. नाउ सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज का डेफिशिएंसी हुआ, और वी कैन से दैट there is one excess of one negative charge. Okay, now isomorphous substitution में जब कोई हायर वैलेंसी कैटायन, सिलिकॉन इज हायर वैलेंसी +4, जो लोअर वैलेंसी एल्यूमिनियम लोअर वैलेंसी मीन +3 से रिप्लेस होगा, तो दोनों का चार्ज का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव राइज टू नेट नेगेटिव चार्ज ऑन टू द सरफेस ऑफ क्ले. नाउ आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन ये टेट्राहेड्रल में भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल में भी हो सकता है. नाउ डिपेंडिंग ऑफ नेचर ऑन मिनरल, in some minerals isomorphous substitution occurs in tetrahedral layer, in some mineral isomorphous substitution occurs in octahedral layer. जैसे माइका,
लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए है माइका इज प्राइमरी मिनरल 2:1. 2:1 मीन्स one silicon tetrahedral layer followed by another aluminum octahedral layer followed by another silicon tetrahedral layer. वर्मिकुलाइट में भी टेट्राहेड्रल में सब्स्टिट्यूशन होता है, इलाइट में भी टेट्राहेड्रल में सब्स्टिट्यूशन होता है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Question is asked, name one mineral where isomorphous substitution occurs in octahedral layer. You see, example is montmorillonite. We have discussed in yesterday's class. Montmorillonite is 2:1 expanding type of mineral where isomorphous substitution occurs in octahedral layer. Octahedral layer में isomorphous substitution, octahedral layer में octahedral cation aluminium है. Now this aluminium that will be replaced by lower valency magnesium or iron. Aluminium में चार्ज कितना है? +3 है. मैग्नीशियम और आयरन में चार्ज है +2. दोनों का डिफरेंस +1. Now if aluminum in octahedral layer is replaced by magnesium और iron in octahedral layer, तो दोनों का चार्ज में डिफरेंसेस +1 है. +1 चार्ज कम मतलब we can say that -1 charge is excess. So this is due to substitution in octahedral layer. So isomorphous substitution जो गोल्डस्मिथ लॉ 1 उसका अकॉर्डिंग होता है, उसमें दोनों आयन का रेडियस का जो डिफरेंसेस है 15 to 20% वेरिएशन इज अलाउड. दिस इज इंपॉर्टेंट. जेआरएफ और एसआरएफ में क्वेश्चन आता है isomorphous substitution occurs in according to which law? 4 options will be there. Your answer will be Goldsmith law 1. कितना परसेंट वेरिएशन अलाउड है, ये भी क्वेश्चन आता है. Your answer will be 15 to 20%. Now again isomorphous substitution octahedral में होता है, tetrahedral में भी होता है. ये मिनरल में डिपेंड करता है. एसआरएफ और नेट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, नेम वन मिनरल where isomorphous substitution occurs in octahedral layer. Your answer will be montmorillonite. I am repeatedly telling as because this question is being asked, name one mineral where isomorphous substitution occurs in octahedral layer. Answer will be montmorillonite. Now isomorphous substitution से जो चार्ज हो रहा है ये मिनरल का स्ट्रक्चर में है. Now इस चार्ज के साथ बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका पीएच का कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए आइसोमर्फस सब्स्टिट्यूशन से जो नेगेटिव चार्ज मिनरल में होता है दिस इज नोन एज परमानेंट चार्ज और स्ट्रक्चरल चार्ज और पीएच इंडिपेंडेंट चार्ज. व्हाई इट इज कॉल्ड पीएच इंडिपेंडेंट चार्ज? क्योंकि पीएच के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है. हम लोग देखे आइसोमर्फस सब्स्टिट्यूशन का कारण क्या है? कारण नहीं है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है टेट्राहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल में एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम और आयरन सब्स्टिट्यूट कर रहा है. पीएच डिपेंडेंस तभी होगा जब देयर विल बी H+ प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल. सो बाहर का सॉल्यूशन का कितना भी पीएच है उसके साथ इसका रिलेशन नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पीएच इंडिपेंडेंट चार्ज. और परमानेंट चार्ज और स्ट्रक्चरल चार्ज, ये जो टर्मिनोलॉजी है दीज आर सिनोनिमस. सो परमानेंट चार्ज, स्ट्रक्चरल चार्ज और पीएच इंडिपेंडेंट चार्ज, इसका कारण है आइसोमर्फस सब्स्टिट्यूशन. नाउ आइसोमर्फस सब्स्टिट्यूशन से पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा? अगर से ऑक्टाहेड्रल में आपका Fe2+ है, आयरन है, उसको एल्यूमिनियम जाके रिप्लेस कर रहा है, मतलब जब हायर वैलेंसी कैटायन जाके लोअर वैलेंसी को रिप्लेस करेगा जस्ट उल्टा, देन पॉजिटिव चार्ज होता है. बट जनरली इन नेचुरल कंडीशन पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, बट इन लैबोरेटरी इट कैन बी क्रिएटेड फॉर सम पर्पस. अगर क्ले में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो ये आइसोमर्फस सब्स्टिट्यूशन एक वे है. बट generally due to isomorphous substitution that is development of negative charge on the surface of clay.
And second type of charge is your pH dependent charge. Some noise is coming. Please mute. All participants are requested to keep their mic on mute positions. Sir, please continue. Nintu sir, unmute yourself, sir. निंदु सर, पहले आप अनम्यूट हो जाओ। Yes. Am I audible now? Yes, sir. Okay. Now another source of charge is your pH dependent charge. pH dependent charge is 1:1 type of mineral. Say kaolinite is 1:1, where we have discussed that kaolinite, one silicon tetrahedral and another aluminum octahedral will be there. Now, ये जो aluminum octahedral है, aluminum octahedral में we know that this octahedral aluminum is linked with hydroxyl OH. Now, depending on pH of the solution, इसमें positive charge हो सकता है. अगर kaolinite is present in acidic environment, so इसका AlOH है. Now it will be attached with proton and ultimately there will be AlOH2 plus. मतलब kaolinite generally acidic environment में होता है, जो soil solution में proton होगा, वो proton ये hydroxyl octahedral hydroxyl के साथ attach होके OH2 plus. In this way there will be development of positive charge in kaolinite. अगर kaolinite alkaline condition में है, alkaline condition means hydroxyl ion will be there. Now this hydroxyl and octahedral hydroxyl दोनों मिलने के बाद water molecule निकलेगा and ultimately oxygen negative, that residual will be there. So this will again generate negative charge. So kaolinite जो 1:1 mineral है, इसका structure octahedral hydroxyl group exposed है, इसलिए acidic condition में इसमें positive charge develop होगा. अगर kaolinite alkaline condition में, generally kaolinite is present in acidic soil, alkaline condition में होता नहीं है. अगर होगा तब there is again possibility of development of positive charge. Alkaline condition there will be development of negative charge. This is kaolinite and amorphous type of minerals. Say in case of allophane immogolite, there is possibility of development of pH dependent charge. pH डिपेंडेंट चार्ज इसलिए बोला जा रहा है, अगर ये मिनरल एसिडिक में होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, अल्कलाइन कंडीशन में होगा तो नेगेटिव होगा. नाउ इंपॉर्टेंट ग्रुप इज आवर ऑर्गेनिक कॉलॉइड. ऑर्गेनिक कॉलॉइड मींस योर ह्यूमिक एसिड, फाल्विक एसिड, ह्यूमिन, जिसमें ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप रहता है. फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C11COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप है C11O. नाउ डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ द सिस्टम इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. कैसे? अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज C11OOH, वी ऑल नो. अगर ये एसिडिक कंडीशन में है प्रोटॉन के साथ, देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक दैट C11OOH2 plus under acidic condition. Proton means acidic condition. अगर ये alkaline condition में है C11O, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग एज ए एग्जांपल ले रहे हैं C11OOH. Now if it is present in alkaline condition means hydroxyl है, so they are C11O minus and there will be formation of water molecule. So there is development of negative charge. So organic molecule के ऊपर, organic colloid के ऊपर totally कोई permanent charge और structural charge नहीं है. इसमें जो charge है totally pH dependent charge है.
इसमें जो चार्ज जनरेट होगा that depend on pH of the system. That's why charge onto your kaolinite, amorphous mineral and dominantly organic colloids, that is humic acid, fulvic acid and humin, all charges, these are pH dependent charge. Acidic condition, that will develop positive charge, and alkaline condition, there will be development of negative charge. So this is the source of charge on soil colloid. One was aluminum silicate, this is that generated due to isomorphous substitution, and another is your pH dependent charge. Now see, here is one scheme where जो ये जो दिखाया गया है iron, this is your octahedral position. Iron presents in octahedral position. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए octahedral में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6. You see clearly, iron is making this 6 bond. That's why coordination number is 6. Now, जब iron octahedral coordination में है, तब क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है OH, इसमें चार्ज कितना है -1, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का प्लस, दोनों का -1 है, और आयरन का चार्ज कितना है +3. आयरन इज मेकिंग 6 बॉन्ड, सो आयरन का +3 चार्ज 6 बॉन्ड में डिवाइड हो रहा है, तो अल्टीमेटली एक एक बॉन्ड में क्या हो रहा है, +½ चार्ज आयरन से आ रहा है, आयरन से +½ चार्ज आया, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें कितना है -1. -1 प्लस आपका नेट लेंगे तो देयर विल बी +½ इसलिए सी OH -½ लिखा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH ऐसा इट कैरीज -1, और आयरन का जो चार्ज का कंट्रीब्यूशन आ रहा है +½ दोनों को मिला के योर नेट विल बी -½ दैट्स व्हाई इट इज रिटन -½ नाउ एक प्रोटॉन अगर OH के साथ जुड़ जाएगा, मतलब हाइड्रोक्सिल OH + H इज H2O, देन हाइड्रोक्सिल का जो चार्ज है 0 हो गया, तो टोटल कितना चार्ज आएगा इसमें, आयरन से जो आया दिस इज +½ सो ऊपर में -½ नीचे +½ नेट चार्ज इज 0. एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, एसिडिक कंडीशन प्रोटॉन इज प्रेजेंट, देन इस हाइड्रोक्सिल में जो -½ था इस प्रोटॉन जाके OH के साथ जुड़ के OH2 दिस इज वाटर बनाया, तो वाटर इसका +½ पहले था फिर +½ हो गया, तो टोटल चार्ज इज पॉजिटिव. एल्कालाइन कंडीशन में क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल ज्यादा है, सो हाइड्रोक्सिल जाके इससे वाटर मॉलिक्यूल को निकला, देन इसमें -½ और -½ पहले था, तो नेट चार्ज इज माइनस. सो इन दिस वे जब मिनरल इज प्रेजेंट इन योर acidic environment means proton, so net charge is positive. When it is present in alkaline environment, net charge is negative. Now इन दोनों का बीच में एक pH रहेगा जब net charge will be 0. See here net charge is 0. So this pH, this is known as your point of zero charge or 0 point charge, ZPC or PZC, whatever you can say. So point of zero charge क्या है, कोई point भी नहीं है, कोई charge भी नहीं है, this is simply pH, where net charge onto the surface of your clay, that is become 0. This is point of zero charge. This is very important. Often question asks, what is your point of zero charge? Now point of zero charge का कौन सा प्रोसेस में चेंज होगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है. नाउ ये जो क्यूलिनाइट में पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है प्रोटॉन के साथ जुड़ेगा, जुड़ के एसिडिक कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड अल्कलाइन कंडीशन में वाटर निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज होगा, एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज में नेट चार्ज 0 होगा. नेट चार्ज 0 मीन्स amount of positive charge that will be equal to amount of negative charge.
So we have already defined point of zero charge. This is the pH where net charge onto the surface of soil colloid is 0. Point of zero charge of silicic acid is 2 SiO4. Then goethite, this is iron containing secondary mineral 8.5 and gibbsite is 9. Down सॉइल्स अगर इंटेंसिव वेदरिंग स्टेज में है तब क्या होगा, उसमें एक्यूमुलेशन होगा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड एनरिचमेंट ऑफ क्यूलिनाइट। क्यूलिनाइट एनरिचमेंट होगा तो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, इसमें ब्रोकन एज में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। नाउ अगर वेदरिंग होगा जिसमें क्यूलिनाइट ज्यादा होगा सो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसको जीरो करने के लिए नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल का जरूरत ज्यादा होगा, हाइड्रोक्सिल जरूरत होगा मीन्स हायर पीएच। सो वेदरिंग के बाद पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज हायर पीएच में शिफ्ट होगा। नाउ पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज ऑफ अल्टीसॉल एंड अल्फीसॉल, सॉइल क्लासिफिकेशन क्लास में आप लोग यू आर फेमिलियर विद अल्टीसॉल एंड अल्फीसॉल। दिस इज रेड सॉइल जो एडवांस स्टेजेस ऑफ वेदरिंग में आता है, generally higher than insectisol. Insectisol is alluvial soil. Altisol and alfisol में क्यूलिनाइट डोमिनेटेड मिनरल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है एंड पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज इज पीएच व्हेयर नेट चार्ज जीरो। सो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसको जीरो करने के लिए नेगेटिव मींस हाइड्रोक्सिल का जरूरत ज्यादा होगा मींस हायर पीएच में शिफ्ट होगा। These are important. Now organic matter lower pH value, generally organic matter under alkaline condition organic matter में नेगेटिव चार्ज होता है। सो नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक मैटर नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ जीरो करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहाँ है, लोअर पीएच पे जब प्रोटॉन एक्टिविटी ज्यादा होगा। सो ऑर्गेनिक मैटर एडिशन ज्यादा होगा तो पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड लोअर पीएच मींस एसिडिक कंडीशन। नाउ फॉस्फेट फिक्सेशन बाय लिगैंड एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज सॉइल कॉलॉइड में ज्यादा होता है तो उसको जीरो करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा होगा। सो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, लोअर पीएच वैल्यू में। सो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज इज नथिंग, point of zero charge is pH where net charge is 0. Now point of zero charge कैसे कैसे वेदरिंग से चेंज होता है, सॉइल ऑर्डर में कैसे चेंज होता है, कौन सा सॉइल ऑर्डर का ज्यादा कौन सा सॉइल ऑर्डर का कम है, कभी कभी कई क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता है तो पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, लोअर पीएच में जाएगा कि हायर पीएच में जाएगा। सो यू हैव टू थिंक and conceptualize it, then you can answer. So this is all about point of zero charge and your charge development onto your soil colloids, organic colloid as well as inorganic colloid. Now soil में जो colloidal component है particularly organic colloid जिसमें जो charge है वो pH dependent है। organic colloid जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एग्जांपल लेके हम लोग डिस्कस किए हैं। इसलिए जब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है तो नेसेसरीली यू हैव टू मेंशन पीएच, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। क्यों, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन पीएच जनरली कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जब डिफाइन किया जाता है पीएच इज केप्ट एट 7। व्हाई, क्योंकि सॉइल का जो ऑर्गेनिक कलर्ड है एसिडिक कंडीशन में अगर हम पीएच को डिटरमिन करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा मींस कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का वैल्यू दैट विल बी लो। अगर एल्कलाइन पीएच में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को हम डिटरमाइन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज मीन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी विल बी हाई, सो देयर विल बी एरर। इसलिए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो डिफाइन किया जाता है स्पेसिफिक पीएच लिखा जाता है, जनरली एट पीएच 7। इसका कारण इसलिए है क्योंकि सॉइल का जो चार्ज है, सॉइल का टोटल चार्ज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉलॉइड दोनों मिला के है। इनऑर्गेनिक कॉलॉइड दैट इज क्ले जिसका चार्ज के ऊपर पीएच का इफेक्ट नहीं है, बट जो ऑर्गेनिक कॉलॉइड है ह्यूमिक एसिड फॉल्विक एसिड है इसका ऊपर जो चार्ज है पीएच से डिपेंडेंट है। सो दैट्स व्हाई while defining cation exchange capacity or CEC of soil you have to mention pH. Now point of zero charge ZPC कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है,
point of लेकिन फर्स्ट वन charge- डाइजेशन hello Yes, sir. Point- I mute them, sir. okay. Yes, sir. Continue, sir. पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज जनरली टाइट्रेशन से डिटरमिन किया जाता है डिफरेंट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से उसको टाइट्रेट करने के बाद डिफरेंट टाइप का इसका वे है। इतना डिटेल्स इसमें जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज कैसे डिटरमिन किया जाता है कोई प्रैक्टिकली आप लोग किए भी होंगे और विल बी डूइंग ड्यूरिंग योर मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम। जो सॉइल पीएच ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जैसे चार्ज कैसे डेवलपमेंट होता है दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। से दिस कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH अंडर alkaline condition means when hydroxyl is high there is development of negative charge। इस हाइड्रोक्सिल के साथ इस हाइड्रोक्सिल का रिएक्शन होकर वाटर there is your removal of water and ultimately residual negative charge is there under alkaline condition। Similarly this is phenol ऑर्गेनिक फंक्शन ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट रहता है। ये भी अल्कलाइन कंडीशन में इन दोनों से वाटर निकल जाएगा एंड अल्टीमेटली रेसिडुअल नेगेटिव चार्ज विल बी देयर। सो ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स के अंदर में जो भी चार्जेस है टोटली पीएच डिपेंडेंट चार्ज। एसिडिक कंडीशन दैट विल डेवलप पॉजिटिव चार्ज एंड अल्कलाइन कंडीशन दैट विल डेवलप नेगेटिव चार्ज। Now another topic was there, that is buffering capacity। Now what is buffering capacity? Buffering generally defined as this is the tolerance to changes of pH of a solution। सॉइल का जो pH है अगर हम कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिस डालेंगे कुछ चेंजेस होगा तो उस pH चेंज को उसको रोकने का जो कैपेसिटी है दिस इज नोन एज बफरिंग कैपेसिटी। Buffering is defined as the tolerance to changes of pH of a solution। ठीक है। नाउ बफरिंग से क्या होगा जब हम लोग एसिडिक सॉइल में लाइम डालते हैं उसको रिक्लेम करने के लिए, तब लाइम डालने के बाद ऐसा नहीं होता है सॉइल का जो पीएच है अब्रप्ट चेंज हो जाएगा। पीएच ऑफ सॉइल का जो चेंजेस होता है बहुत ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होते मीन सॉइल का कैपेसिटी है टू रेजिस्ट उस चेंज को रोकने का कैपेसिटी है। नाउ जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक एसिड निकलता है। ऑर्गेनिक एसिड मींस प्रोटोन यू आर एडिंग। नाउ प्रोटोन से भी सॉइल का पीएच कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालने से, कभी आप लोग सुने होगा जो सॉइल का पीएच एसिडिक हो गया, नहीं होता है क्योंकि उसका भी रेजिस्ट करने का कैपेसिटी सॉइल के अंदर में है। इस कैपेसिटी की वजह से जब लाइम डालेंगे तब भी बहुत ज्यादा पीएच सॉइल का होगा नहीं। सिमिलरली जब ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे डिकम्पोजिशन से एसिड निकलने के बाद भी पीएच सॉइल का एसिडिक कंडीशन में नहीं जाता है ड्यू टू दिस बफरिंग कैपेसिटी। एंड बफरिंग कैपेसिटी सॉइल का अंदर में अगर क्ले ज्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो बफरिंग कैपेसिटी हाई होगा। सॉइल का CAC अगर ज्यादा होगा तो बफरिंग कैपेसिटी दैट विल बी हाई। जनरली बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होता है विद इन pH 4.5 टू pH 6 का अंदर में। नाउ टाइप ऑफ क्ले मिनरल में अगर मोनोमिनरल टाइप क्ले मिनरल होगा उसका बफरिंग ज्यादा होगा। सो बफरिंग एक्शन इन केमिस्ट्री में दिस इज ड्यू टू योर इन्फ्लुएंस ऑफ वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट। जैसे एग्जांपल हम लोग pH मीटर में जब pH का रीडिंग लेते हैं तो कैलिब्रेट करते हैं ना, pH 4, pH 7, pH 9.2 और 10। नाउ pH 7 में बफर यूज किया जाता है जो केमिकल आप लोग यूज करते हो दैट इज अमोनियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड। अमोनियम एसीटेट एक सॉल्ट है, कैसे बना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और एसिटिक एसिड वीक एसिड। सो वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड। इसलिए लिखा जाता है दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट। नाउ सॉइल का बफरिंग कैपेसिटी कहां से आता है? सॉइल का बफरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट एज बफरिंग एजेंट। वो पीएच का चेंज को रेजिस्ट करेगा। नाउ ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटीज अगेन एक्ट्स एज ए बफरिंग
agent. Now colloidal complex of the soil, colloidal complex of the soil means aluminosilicate clay. This again acts as a weak acid and its salt, and its function like एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट. जैसे वापर हम लोग डिस्कस किए थे, वापर जो वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट है, जैसे अमोनियम एसिटेट एसिटिक एसिड. तो हमारा क्ली मिनरल भी ये फंक्शन लाइक योर एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट टाइप ऑफ वापर. So buffering capacity is nothing but it is the tolerance with respect to change in pH of a soil, and ये बफरिंग कैपेसिटी जनरली विद इन पीएच 4.5 to 6 के अंदर में मैक्सिमम होता है. सॉइल में अगर क्ले मिनरल पर्टिकुलरली 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल होगा, मोनोक्लोराइड बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा. नाउ बफरिंग कैपेसिटी सॉइल में आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ से योर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट as well as production of organic acid during decomposition of organic matter, and soil का जो inorganic colloidal complex है जैसे अब clay minerals है, this is again acts as a salt of weak acid and base. So each of soil component है that adds to the buffering capacity of soil. Hello, sir. Yes. Yes, sir. Any reason behind the highest buffering capacity between 4.5 to 6? Between 4.5 to 6 buffering capacity is high as because ये जो range है 4.5 to 6 इसके अंदर में you see this is almost close to your neutral range or so. So maximum soil का जो activity है, activity in terms of your microbial population, bacteria, fungi and actinomycetes, as well as soil component का अंदर में जैसे हम लोग pH डिपेंडेंट जो चार्ज डिस्कस किए थे ना, एसिडिक में पॉजिटिव चार्ज होगा, अल्कलाइन में नेगेटिव चार्ज होगा. सो मोरलेस ये जो pH कंडीशन में ही न्यूट्रल कंडीशन में रहता है चार्ज भी टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी. सो ऑल फैक्टर दिस सॉइल जो इनऑर्गेनिक कॉलोइडल कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कॉलोइडल कंपोनेंट है, एज वेल एज योर माइक्रोबियल एक्टिविटी. माइक्रोबियल एक्टिविटी क्यों हम बोले, क्योंकि सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डालने के बाद जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन इज मेडिएटेड बाय माइक्रोब्स ना, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, इसका एक्टिविटी भी ज्यादा होगा. सो योर ऑर्गेनिक कॉलोइड, इनऑर्गेनिक कॉलोइड एज वेल एज ऑर्गेनिक एसिड, this production as well as charge characteristics is optimum under this condition. Okay, so that's why this buffering capacity degree is maximum between this pH range. Okay. Yes, sir. Now after this, if there is any questions we can take. Otherwise next session will start. Suman, continue करे. Yes, sir. Yes, sir. If any question, dear students, you have any question, please ask. Or sir, you have any question, you ask, please. How line change the pH, sir? One question in the chat box, sir. Or sir, explain again the ZPC. Sir, brief about the ZPC again, sir. Again, na? Yes, yes. Okay. In 1 to 2 minutes, sir. We brief it. Okay. So point of zero charge सब लोग डिस्कस किए हैं. Yes. So point of zero charge is a pH basically. Point of zero charge कोई point भी नहीं है, कोई charge भी नहीं है, pH है, where net charge onto the surface of clay, a soil that becomes zero. जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं जो क्ले मिनरल है, इस ऑक्टाहेड्रल मिनरल है, एसिडिक कंडीशन में इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, प्रोटॉन वो इसके साथ जुड़ रहा है, सो दिस डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज. अल्कलाइन कंडीशन में हाइड्रोक्सिल ज्यादा है तो वाटर निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज हो रहा है. नाउ एक पर्टिकुलर पीएच के बीच में व्हेयर amount of positive charge is equals to amount of negative charge. कैसे आप देखो, ये OH2 के प्लस ऑफ चार्ज है, ऊपर में माइनस ऑफ चार्ज है.
So at that particular pH, we said that this is at point of zero charge, where जितना amount of positive charge mineral के अंदर में हो रहे हैं उतना ही amount of negative charge हो रहा है. So net surface charge will be zero. That's why it is written as zero. So point of zero charge is pH where net charge onto the surface of colloidal clay or organic matter or soil that becomes zero. Okay, amount of positive charge is equals to amount of negative charge. What was other question, Shumon? No question, sir. There is some question not related to our topic, sir. Please, sir, move on some next topic, sir. It's related to the acidic soil, sir. We are a special lecture on the acidic soil, sir. Where Okay. That they will be discussing. Okay. So there is no question in chat box, na? No, yet, sir, no question. Sir, I have one question, sir. Yes. Sir, my question is towards the when you need in the previous years and in next exam, ask the question about the when the soil is more weathered. What about the weathering? Weathering is at the maturity when ZPC is. जब weathering maturity पे होगा तो ZPC के बारे में आप क्या कर सकते हैं? It's a low, I hope, sir. Yes. Now ZPC के बारे में हम लोग डिस्कस किए ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो भी हमारा स्लाइड में था. क्या होता है जब वेदरिंग मैक्सिमम होता है? आप सॉइल ऑर्डर के देखोगे ना, सॉइल ऑर्डर पीएफ सॉइल ऑर्डर से देयर, जैसे हम लोग एंटी सॉइल है, एंटी सॉइल सॉइल डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा डेवलप होगा उससे इंसेप्टी सॉइल है. फिर हमारा अल्फीसॉल है, आर्टिसॉल एंड ऑक्सीसॉल. ऑक्सीसॉल इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ वेदरिंग. ठीक है ना. अल्टीमेट लेवल ऑफ वेदरिंग में क्या होता है? ऑक्सीसॉल में कलर इज रेड, जनरली डोमिनेटेड बाय आयरन मिनरल, एंड आपका क्ले मिनरल होगा क्यूलिनाइट. Yes, sir. एंड हम लोग डिस्कस किए है क्यूलिनाइट ऐसा मिनरल है जिसमें एसिडिक कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है. नाउ पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, आपका पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? पॉइंट वेयर नेट चार्ज विल बी जीरो. तो वेदरिंग से आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है, इसके जीरो करने के लिए आपको क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए, मींस हाइड्रोक्सिल. ओके. हाइड्रोक्सिल कहाँ मिलेगा? हायर पीएच में. ठीक है. सो ड्यू टू वेदरिंग पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज विल बी शिफ्टेड टुवर्ड हायर पीएच वैल्यू. ठीक है. मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना होगा. उसके बाद उस जो एडवांस स्टेजेस ऑफ वेदरिंग में क्या हो रहा है इसको सोचो. इफ यू कोरिलेट देन यू कैन आंसर. ओके. Yes, sir. So I think there is no more questions. Yes. Now we'll be switching over to another aspect, that is your double diffuse layer, potential distribution in diffuse double layer. Now why it is called so? We had discussed in last class also, and in today's class also, this clay mineral that carries your negative charge, isn't it? And negative charge का जो source है वो भी हम लोग डिस्कस किए. This is isomorphous substitution. Now से जो clay surface है ये negative charge, this is your negatively charged layer. Soil solid it is written, that is clay surface जिसमें negative charge है. वो टेट्राहेड्रल में भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल में भी हो सकता है. Now here there is increase in distance. Clay surface से solution का साइड में distance increase हो रहा है. Now here x surface में distance it is written x equals to 0. ठीक है. Now soil solution में क्या है? Soil solution में cations है, anions भी है. Cation means your hydrated से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. ठीक है. कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, this sort of ions are there. A normal condition dominated by calcium and magnesium. ये सब cation है. Yes, sir. Now clay surface में negative charge है, so automatically this negative charge solution में जो cation है उसको attract करेगा. We all know that this is Coulomb force of attraction, isn't it? जिसमें क्या होता है? This Coulomb force, if this is equals to charge Q1 Q2 by R square. R is distance of separation. Means small distance में inversely proportional
कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस इंक्रीज करेगा फोर्स कम होते जाएगा, as because if this is inversely proportional to r, isn't it? उसका मतलब यही है, ये जो कॉलोइडल सरफेस है, इस सरफेस में नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इफेक्ट मैक्सिमम इधर पर है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट हियर। नाउ जितना हम डिस्टेंस इधर से इंक्रीज करेगा फोर्स कम होते जाएगा, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन दैट विल बी देयर हियर। फिर इधर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इन दिस डायरेक्शन देयर इज इंक्रीज इन डिस्टेंस, सो नंबर ऑफ कैटायन विल बी लेस, देन अगेन लेस, देन लेस। ऐसा ऐसा करके एक पॉइंट आएगा जिसमें इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, इस पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका इफेक्ट कुछ रहेगा ही नहीं। अगर इफेक्ट नहीं रहेगा कैसे मालूम चलेगा? where this number of cation will be equals to number of anions। इसमें जैसे ही इसका क्लोज पोजीशन में नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा हो रहा था, क्यों? क्योंकि क्ले सरफेस में नेगेटिव चार्ज है, एंड नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसका रिलेशन क्या है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मींस मिनिमम इज डिस्टेंस, माने मिनिमम डिस्टेंस में मैक्सिमम फोर्स है। मैक्सिमम फोर्स है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायंस आर देयर। जब क्लोज में जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैटायन डिक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसमें इस पोजीशन में जो नेगेटिव चार्ज है क्ले सरफेस, इसका इफेक्ट कुछ रहेगा ही नहीं। नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ कैटायन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायन, and that is known as your bulk solution। bulk solution एक इमेजिनरी डिस्टेंस है क्ले सरफेस में, जहां पर क्ले का जो नेगेटिव चार्ज फील्ड है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट नहीं है, उसका इंडिकेशन क्या है? नंबर ऑफ कैटायन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायन। ओके, सो वी कैन से दैट नेगेटिवली चार्ज क्ले सरफेस का ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इस कैटायन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस टाइप का है, जो क्लोज उसका एरिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन रहेगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सो यू कैन से दैट दिस इज मोर और लेस फिक्स्ड। और ई लेयर छोड़ के जितना दूर में जाएंगे तो नंबर ऑफ योर पॉजिटिव फोर्सेस कम होते जाएगा। सो दैट पार्ट इज वी कैन से दैट दिस इज डिफ्यूज पार्ट। फर्स्ट पार्ट दिस इज ऑफ योर कैटायन, जिसमें ड्यू टू मैक्सिमम योर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्ले सरफेस, दिस इज फिक्स्ड ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना डिस्टेंस जा रहा है तो गैस मॉलिक्यूल जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, धीरे धीरे कम होते जाएगा, फोर्स भी डिके हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ कैटायंस कम होते जा रहा है। दैट पार्ट इज नोन एज योर डिफ्यूज पार्ट। तो दोनों लेयर को अगर आप कंबाइन करोगे मतलब दिस फिक्स पार्ट and your diffuse part, this is your fixed part and this is your diffuse part. This both is your double diffuse layer. Now colloid chemists, they were trying to describing ये जो दो टाइप का कैटायन का डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल क्ले सरफेस के ऊपर में, तो देयर आर बेसिकली थ्री हाइपोथेसिस। वन वाज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज का फर्स्ट कहना क्या था? हेल्महोल्ट्ज, दिस इज नेम ऑफ वन कॉलोइडल केमिस्ट। उनका कहना था जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का एकदम क्लोज उसमें ही रहेगा, ठीक है, देयर विल बी नो डिफ्यूज लेयर। सो हेल्महोल्ट्ज उनका कहना था जो नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल क्ले सरफेस का सरफेस में उसका क्लोज में जो पॉजिटिव चार्ज कैटायन रहेगा, दैट विल बी इन अ सिंगल लेयर just like a parallel plate condenser। These are parallel, you see this is your negative layer, this will be positive layer, so parallel, just like a parallel plate condenser। This was given by Helmholtz। उसके बाद another school of colloidal chemist, Goy and Chapman, they conceptualize that no, इस टाइप का फिक्स कोई नहीं रहेगा जो नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद डिफ्यूज टाइप का लेयर रहेगा, मींस कोई फिक्स लेयर भी नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे जो गैस, एक सिलेंडर में अगर हम गैस रखेंगे, हाइड्रोजन गैस और दूसरा गैस, जैसे करके गैस का मॉलिक्यूल घूमता है ना, ऐसा करके घूमेगा।
So this was given by your Goy-Chapman. Now, third hypothesis that was given by Stern, where he combined these two, your Helmholtz, this is fixed part, and diffuse part of Goy-Chapman. And this third one, this is known as your Stern layer. So Stern layer में first is your Helmholtz part, this parallel plate condenser, and Goy-Chapman diffuse part. So if we consider the Stern layer of diffuse double layer, then this is combination of Helmholtz layer as well as Goy-Chapman layer. So basically practically it happens so जो positive charge जो close में रहेगा negatively charged surface में naturally है उसमें ज्यादा रहेगा. So this will more or less fix, and another part that will be diffuse. So parallel plate condenser that was proposed by Helmholtz and diffuse part that was proposed by Goy-Chapman. If you combine these two, you'll be getting Stern layer. In Stern, first is your this fixed and another is diffuse part. Now, in your diffuse double layer, this is very important. Now, if we consider about एक पर्टिकुलर कैटायन से एक काउंटर आयन है, इस पोजीशन में कैटायन है. नाउ इस कैटायन के अंदर में कौन सा टाइप ऑफ फोर्स काम कर रहा है? दो टाइप का. यू सी दिस नेगेटिवली चार्ज से प्लेस सरफेस, वो इसको सरफेस का उधर खींच रहा है, एंड अनदर इज योर, वी ऑल नो दैट दिस आयंस दिस आर इन ब्राउनियन मूवमेंट, थर्मल मूवमेंट, जो इसको बाहर लेके जाएगा. एक जो नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन है वो सरफेस को उधर खींचेगा, एंड दूसरा है इसका जो थर्मल मूवमेंट है, कंटिन्यूअस मूवमेंट है, दैट इज दैट उसका जो टेंडेंसी है इसको सरफेस से बाहर बाल्क सॉल्यूशन को उधर ले जाने का. सो बेसिकली आयन कहां पर रहेगा, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स. वन इज योर इलेक्ट्रिकल फोर्स, अनदर इज योर थर्मल फोर्स. नाउ इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कैटायंस को नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल सरफेस का उधर ले जाने का जो टेंडेंसी है, ड्यू टू दिस देयर विल बी डिक्रीज इन टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ दिस सिस्टम. टोटल एनर्जी और हीट कंटेंट आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे. दिस इज नोन एज एंथैल्पी. एंथैल्पी मींस टोटल एनर्जी कंटेंट और हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम. एंड ये जो सरफेस से बाहर जाने का टेंडेंसी है, दिस इज थर्मल मोशन. सो बेसिकली इससे क्या होता है, इसका रैंडमनेस इंक्रीज होगा, chaosness इंक्रीज होगा. दैट इज इन थर्मोडायनेमिक्स दिस इज नोन एज योर एंट्रोपी. सो बेसिकली जो आयन है इसका ऊपर दो फोर्स एक्शन होने से क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी. अगर हम थर्मोडायनेमिक्स व्यू पॉइंट से सोचेंगे तो we all know that this delta G gives free energy is equals to delta H minus T delta S. Delta G is free energy change, H is your enthalpy and S is your entropy. कोई भी सिस्टम नेचुरल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, इरिवर्सिबल होगा, when gives free energy change that should be negative. now हमारा इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डेल्टा G कम हो रहा है एंड डेल्टा S ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली free energy change that will be your negative. Negative means your system is natural system, spontaneous system or irreversible system. This is the thermodynamic explanation of this. Now if we think about potential, potential is nothing but potential energy. Potential energy, you all know that potential energy capacity to do work by virtue of size, shape or position. Now potential energy and potential में क्या difference है? When potential energy that is expressed per unit weight or volume basis, this is known as your potential. अगर हम इसमें potential का बारे में consider करेंगे तब क्या आएगा? Potential का ये हम लोग चार्ज फील्ड में है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, हमारा जो लेयर में आयन है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है. ऑब्वियसली जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग इन चार्ज फील्ड. नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन इसमें क्या है? बाय डेफिनेशन अगर आप याद करोगे योर +2, इलेक्ट्रिकल का पोटेंशियल डेफिनेशन है एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी
distance से point under consideration means our surface where negative charge is there लाने में जितना काम करने का जरूरत होगा, this is the definition of electrical potential. Now we know that हमारा क्ले सरफेस में नेगेटिव चार्ज है, हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काम कहाँ करना पड़ेगा? सरफेस में. जितना हम इधर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कम होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क हमको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा. सो मैक्सिमम काम हमको सरफेस में करने, इसलिए यू सी दिस लाइन, दिस पोटेंशियल कर्व इज लाइक दिस. मैक्सिमम एट सरफेस, जितना डिस्टेंस हो रहा है पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन है एक इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी डिस्टेंस से इस पॉइंट में लाने के लिए जितना काम किया जाएगा, दिस इज द बाय डेफिनेशन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल. हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं? x इक्वल्स टू 0 मींस क्ले सरफेस में जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा, सो मैक्सिमम काम उसमें करना पड़ेगा. सो x इक्वल्स टू 0 में पोटेंशियल इज हाईएस्ट. जब हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा. देयर डिक्रीज इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है. ठीक है. नाउ जब ये दोनों लेयर के अंदर में जो पोटेंशियल का डिफरेंसेस है, दोनों लेयर मींस वन इज योर फिक्स्ड लेयर, that is this part potential at this point, and here this is bulk solution. This difference in potential between these two, this is known as your electrokinetic potential or zeta potential. So this is symbol of zeta. So zeta potential is nothing but this is the difference in potential between this is fixed layer and this is your bulk solution और free mobile layer. दोनों के अंदर में जो potential का difference है, कितना difference है? This much. This is known as your zeta potential. So zeta potential, this is the difference of potential between fixed layer and free mobile layer. Fixed layer means star layer and free mobile layer, that is outer side of Gauss-Chapman layer. This is known as your electrokinetic potential or zeta potential. This is very important. Several questions asked regarding your zeta potential or so. So अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए? हम लोग ये देख रहे थे जो नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल क्ले सरफेस से उस सरफेस का साथ जो कैटायंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें हम लोग ये डिस्कस किए हैं. क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, कूलम्ब फोर्स मैक्सिमम है लोएस्ट डिस्टेंस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा. जितना हम इस साइड में इंक्रीज डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फोर्स कम होते जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस विल बी लेस एंड लेस. होते होते एक पॉइंट आएगा जिसमें इसका कोई नेगेटिवली चार्ज का इफेक्ट ही नहीं रहेगा, दैट इज नोन एज योर बल्क सॉल्यूशन. क्या क्राइटेरिया है? जिसमें नंबर ऑफ कैटायन विल बी नंबर ऑफ एनायन. अदरवाइज इन दिस पोजीशन कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, उसके बाद जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे कम होते जाएगा, फिर धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जिसमें नंबर ऑफ कैटायन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन. इसके बाद हम लोग इसमें पोटेंशियल का भी डिस्कस किए. पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी डिस्टेंस से इस पॉइंट में लाने के लिए जितना काम करना होगा, ये मैक्सिमम इधर होगा. उसके बाद जितना आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल कम होते जाएगा. तब ये जो फिक्स लेयर एंड फ्री मोबाइल लेयर के अंदर में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज नोन एज योर जीटा potential. Now we are discussing so whatever written there that has already been discussed. Thermal motion में movement होता है, जिसको counter ion को micellar solution और inner solution बोला जाए. This is your cation, so calcium is with hydrated. Okay. Now जो दो फोर्स उसके ऊपर काम करता है cations के ऊपर, one is your electrical force, another is your diffusion or thermal movement. Okay, now this diffusion atmosphere gaseous type of molecules distribution of cations, this was given by Gauss and Chapman. This was discussed. Now you see, according to Gauss we are discussing now, so these cations, this will be randomly distributed like distribution of gas molecule. And Helmholtz also we have discussed that just like a parallel plate,
condenser distribution. Parallel plate condenser means this is your negative charge layer and there will be another positive charge layer. This was Helmholtz hypothesis. Now Stern model, we are discussing that Stern, basically this is combination of your Helmholtz and Guy-Chapman. This first part it was fixed and second part is used outer diffuse layer. Now distance from surface and electrical potential, we have also discussed that potential is maximum at surface. With increase in distance, potential that will be decreasing. Now किसी भी एक कंडीशन में नंबर ऑफ आयंस सरफेस से एक डिस्टेंस में कितना होगा, दैट इज योर, दैट यू कैन गेट फ्रॉम बोल्ट्जमैन इक्वेशन. ये जो जेआरएफ के लिए नहीं लेकिन एसआरएफ एंड नेट के लिए इंपॉर्टेंट है. सो फॉर नोइंग एक सरफेस से एक डिस्टेंस में कितना नंबर ऑफ कैटायंस होगा ये जानने के लिए बोल्ट्जमैन इक्वेशन यूज होता है. नाउ बोल्ट्जमैन इक्वेशन आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस. इन दिस इज नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन इन बार्क सॉल्यूशन इनटू एक्सपोनेंशियल मींस e टू द पावर. हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ योर इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड kT दिस इज योर थर्मल फोर्स कंपोनेंट. बेसिकली उसका कॉम्बिनेशन में आयन कहा रहेगा, ये हम लोग डिस्कस किए. दिस इज मैथमेटिकल पार्ट. Okay, V is valency, E is electrical charge and phi is your electrical potential component. So V is phi, this is the component of electrical energy and kT is thermal energy. That's because counter and के ऊपर दो ही force काम करता है. Okay. Now see, if we plot जो ion concentration surface से इस distance increase करने के साथ क्या होगा, you see N plus is number of cation. This is maximum at close to surface. जितना टाइम डिस्टेंस इंक्रीज करेगा कम होते जाएगा क्योंकि फोर्स कम होगा. सिमिलरली n minus is number of anion. It is in negative axis. This is minimum at x equals to 0. With increase in distance that gradually increase and एक point आएगा जिसमें these two are equal. This is graphical presentation. Now space charge density and local your this is again important, local charge density and electrical potential. This is you can relate to Poisson equation. Generally for NEET and SRF examination this is asked what Poisson equation says. This is basically relationship between density of charge and electrical potential. Phi is electrical potential and rho is density of charge. इसको अगर सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, this is the equation of potential. Phi, this is potential at a distance x, that will be phi 0. Phi 0 is potential at surface, that was maximum, into e to the power minus kappa x. X is your distance, k is constant. Now this equation indicates that surface potential of colloid particle decreases exponentially. हम लोग वो ग्राफ में भी देखिए ना, मैक्सिमम एट सरफेस में, उसके बाद जितना डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल कम होते जाएगा. So this is mathematical expression, phi equals to pi into e to the power minus kappa x. Now kappa, this is again very important. This is your under root of 8 pi. N is number of ion, V is valency, E is your electrical charge, epsilon is dielectric constant, K is Boltzmann's constant, T is temperature. Now depth and thickness of double layer, this is very, very important. Depth or thickness of double layer, this is the distance from the surface to the bulk solution where this potential surface potential से 1 by e time कम हो जाएगा. This is known as your depth of thickness. Means ये जो equation है phi equals to phi 0 into e to the power kappa x, उसमें आपको x का वैल्यू होगा 1 by k. अब सॉल्व करने के बाद phi 0 by e. So depth of double layer को अगर d, that will be 1 by k. That will be your epsilon kt by 8 pi n square v square under square root. This is very important, depth and thickness of double layer. You see n is equals to number of ion cations, v is valency of ion, e is charge of ion, means d depth or thickness of double layer. आप इस इक्वेशन से देखोगे नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होगा तो डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, सो डबल लेयर विल बी थिन, डबल लेयर का थिकनेस कम होगा. नंबर ऑफ आयंस अगर कम होगा तो डबल लेयर विल बी थिक. ओके, नाउ वैलेंसी,
वैलेंसी का इसका स्क्वायर रूट से भी इनवर्स रिलेशन है, मींस अगर डबल लेयर में हमारा मोनोवैलेंट से डाइवैलेंट कैटायन रहेगा तो डबल लेयर का थिकनेस कम हो जाएगा। सिमिलरली ट्राइवैलेंट होगा, थिकनेस और भी कम होगा, टेट्रावैलेंट होगा और भी कम होगा। ठीक है, एंड चार्ज के साथ भी रिलेशनशिप है, ऑटोमेटिकली चार्ज जब ज्यादा होगा तो थिकनेस कम होते जाएगा। सो अगेन दिस क्वेश्चंस आर कम, कंसंट्रेशन से क्या रिलेशनशिप है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन आप 4 टाइम इंक्रीज करोगे, मींस नंबर ऑफ कैटायंस आप इंक्रीज करोगे तो थिकनेस ऑफ डबल लेयर विल बी रिड्यूसेस टू हाफ। ये हम लोग इस रिलेशनशिप से देख पाएंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेथ। ओके, उस इक्वेशन में आप बैठा दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन दैट वाज इन, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो थिकनेस डी हाफ हो जाएगा। नाउ वैलेंस ऑफ काउंटर आयन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डबल लेयर डाइवैलेंट कैटायन वैलेंसी थिकनेस विल बी हाफ टू दैट ऑफ द मोनोवैलेंट कैटायन, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इंक्रीज होगा तो डबल लेयर थिक हो जाएगा, एज बिकॉज ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन दिस इज देयर इन न्यूमरेटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल एंड जीटा पोटेंशियल भी हम लोग डिस्कस की है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन योर फिक्स्ड लेयर and free mobile layer, this part, this is known as your zeta potential, and there is relationship of zeta potential and charge density. Electrokinetic potential and zeta potential का measurement, this is given by 4 pi ed by your epsilon d. Small d is your depth or thickness of double layer and this is your dielectric constant. So you have to remember this, how you can measure zeta potential, this relationship, this is again important. Now जीटा पोटेंशियल से एक रिलेशनशिप आता है, कौन सा कंडीशन में सॉइल का जो कॉलॉइड है स्टेबल होगा कि फ्लक्चुएशन कंडीशन में रहेगा, दैट इज योर डिनोटेड बाय जीटा पोटेंशियल। एंड हियर जीटा दो कॉलॉइड पार्टिकल है, सी योर सिस्टम यू आर हैविंग, हमारा कॉलॉइडल सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्ले पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, जो भी नेगेटिव चार्ज है उसके साथ डबल लेयर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। नाउ एक नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल क्ले सरफेस दूसरा नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल क्ले सरफेस से जब इंटरेक्ट करेगा तब कौन सा फोर्स उसमें काम करेगा, बेस्ड ऑन दैट अगर एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल के साथ जुड़ेगा तभी फ्लक्चुएशन बनेगा। फ्लक्चुएशन क्या होता है, जैसे एक कॉलॉइडल सिस्टम है, different type of clay particle है। now flocculation means one clay that will be attach होगा दूसरा क्ले के साथ, तीसरा क्ले के साथ, धीरे धीरे इसका साइज ज्यादा होगा तो ये सॉल्यूशन में नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीमेंटिंग एजेंट ऑर्गेनिक मैटर होके एग्रीगेट बनता है। तो फर्स्ट स्टेप इज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन होने के लिए दो कॉलॉइडल नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल क्ले सरफेस विद डबल लेयर टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दे मस्ट कम क्लोजर, एक दूसरे के साथ क्लोज आना चाहिए, अदरवाइज इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा। नाउ एक क्लोज आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज डिनोटेड बाय योर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। यू सी कौन सा फोर्स कम करेगा, वन इज योर रिपल्सिव फोर्स, अनदर इज योर अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे एक नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल क्ले सरफेस है उसमें डबल लेयर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, सिमिलरली और एक नेगेटिवली चार्ज क्ले है उसमें डबल लेयर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। जब दोनों क्लोज आएगा, ये जो काउंटर आयन है पॉजिटिव, दे विल बी रिपल्शन, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अट्रैक्शन कौन कम करेगा, से इसका नेगेटिवली चार्ज इसका पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज योर वैन डेर वाल अट्रैक्शन। सो दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, उसमें डिपेंड करेगा ये रिजल्टेंट फोर्स अगर ज्यादा आपका जो वैन रिपल्सिव फोर्स दैट इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स वीआर एंड वैन अट्रैक्टिव फोर्स, अगर वैन अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा देन ओनली ये रिपल्शन को ओवरकम करते हुए एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल के साथ आके जुड़ पाएगा एंड फ्लक्चुएशन बनेगा। नाउ
लो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई, तीनों कंडीशन में इसका क्या इफेक्ट रहता है। यू सी this is your when electrolyte concentration is low, electrolyte concentration is high, then क्या हो रहा है, जो रिपल्सिव फोर्स इसका वैल्यू कम होते जाके अट्रैक्टिव फोर्स, वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्स का नेचर क्या है, दिस इज एडिटिव। एडिटिव मींस जितना नंबर उसके साथ जोग होगा उतना ही टोटल फोर्स का अमाउंट होगा। मींस व्हेन हाई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन मींस हाई नंबर ऑफ कैटायंस, पॉजिटिव आयंस दैट विल बी देयर। सो नंबर बढ़ने से क्या होगा, एक दूसरे का जो अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ जाएगा, तो वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्स दैट विल बी हायर, दैट विल ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ओवरकम करने से ही देन एक कॉलोइडल क्ले पार्टिकल दूसरे कॉलोइडल क्ले पार्टिकल के साथ आके जुड़ जाएगा एंड देयर विल बी फ्लक्चुएशन। So flocculation and coagulation, this is very important. So basically जो नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल क्ले सरफेस है, एक सरफेस दूसरा सरफेस के साथ अगर ये रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करते हुए कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी योर हाई इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। हाई इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन होगा तो डबल लेयर का जो थिकनेस कम हो जाएगा, ठीक है। डबल लेयर का थिकनेस अगर कम हो जाएगा तो जीटा पोटेंशियल का वैल्यू दैट विल बी लो। लो वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल मींस आपका फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल के साथ जुड़ जाएगा। जीटा पोटेंशियल का वैल्यू अगर ज्यादा है तो योर सिस्टम दैट विल नॉट बी फ्लक्चुएटिंग, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा। So lower value of zeta potential, this is desirable so far your flocculation is concerned. Flocculation होता है, flocculation में एक जैसे क्ले पार्टिकल दूसरा क्ले पार्टिकल के साथ अटैच होके नीचे आता है, फ्लक्चुएशन के साथ योर ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड होगा, देन देयर विल बी फ्लक्चुएशन प्लस सीमेंटेशन इज इक्वल्स टू एग्रीगेशन, सॉइल एग्रीगेट बनता है। सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डेवलप क्लियर कट आइडिया अबाउट जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल कौन सा कंडीशन में ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी के कॉलोइडल जो फ्लक्चुएशन है उसके लिए लोअर वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल इज डिजायरेबल। लोअर वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल कहाँ मिलता है, एट हाई इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन व्हेन नंबर ऑफ कैटायन दैट विल बी हाई। सिमिलरली अगर डाइवैलेंट कैटायन रहेगा तो जीटा पोटेंशियल कम होगा। कैल्शियम वी हैव डिस्कस्ड दैट द रिलेशनशिप ऑफ जीटा पोटेंशियल एज वेल एज थिकनेस। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉइल में लोग देखिएगा, जैसे सोडियम डोमिनेटेड है, अल्कली सॉइल है तो उसमें डिस्पर्स कंडीशन है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है, अच्छे एग्रीगेट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम आयन डोमिनेंट है, सोडियम आयन का आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है, दैट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, हाईली हाइड्रेटेड रहता है, तो इसका टोटल साइज ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो डबल लेयर का थिक करेगा, थिकनेस बढ़ेगा तो जीटा पोटेंशियल विल इंक्रीज। जीटा पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा तो एक कॉलोइडल पार्टिकल क्ले दूसरा कॉलोइडल क्ले पार्टिकल के साथ रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट ओवर वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्स, सो फ्लक्चुएशन विल नॉट बी देयर। एक क्ले दूसरा क्ले पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स ओवरकम करके एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं आ पाएगा, सो देयर विल नॉट बी एनी योर फ्लक्चुएशन। इसलिए अल्कली सॉइल में पुअर फिजिकल कंडीशन होता है। तो आप लोग हमको ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये अल्कली सॉइल में तो ठीक है फ्लक्चुएशन नहीं है, पुअर फिजिकल कंडीशन है, लेकिन सैलाइन सॉइल उसमें भी सोडियम ज्यादा रहता है। सैलाइन सॉइल में क्या होता है, सोडियम लेकिन फिर भी उसका सर सॉइल इज द सर गुड हाँ एग्रीगेशन इज गुड, तब क्वेश्चन ही आता है ना, सोडियम अल्कली सॉइल में भी है, उसमें तो आप बोल रहे हो भाई इसमें डबल लेयर थिक हो जाएगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा तो एक दूसरे के साथ साथ आने नहीं देगा। लेकिन सेम सोडियम सैलाइन सॉइल में जाके अच्छा एग्रीगेटेड सॉइल दे रहा है, ठीक है। इसका रीजन नहीं है क्योंकि सैलाइन सॉइल में क्या होता है, सॉल्ट concentration is high, electrical conductivity is more than 4, so more number of sodium ions there, ठीक है, more number of sodium ionic concentration ज्यादा है कैटायन का। नाउ हम लोग एक रिलेशनशिप देखे है ना, डेप्थ और थिकनेस के साथ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप है। यू सी दिस डेप्थ और थिकनेस
This is inversely proportional to n. N is number of present ion present. जो saline cell में क्या हो रहा है, number of sodium concentration is high, so more number of sodium present, and our depth and thickness is inversely proportional to number of ion present. जब सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है सलाइन सॉइल में, तब क्या करेगा, ये डेप्थ और थिकनेस ऑफ डबल लेयर को कब कर देगा, कब कर देगा, तो जीटा पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब सोडियम एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इट क्रिएट्स पॉपुलेशन, but sodium at low concentration in alkali soil it creates your dispersion. ठीक है सुमन? Yes, yes, sir. Understood, sir. You'll not be getting this explanation in any textbook. कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है. Yes, sir. समझ गए? अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, स्टूडेंट को भी पूछो, चैट बॉक्स देखो कोई आया है कि नहीं. अभी तक तो सब समझ में आया है सर. आगे सर कंटिन्यू. आपको आया, दूसरे स्टूडेंट को भी आ रहा है कि नहीं? सर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो. राम, you have any question? No, sir. नो, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? Yes, sir, आ रहा है. आ रहा है. ओके, सो नो डाउट, क्योंकि कोई टेक्स्ट बुक में, सोसाइटीज का बुक, ये सब में, सब किसी भी एक किताब में सब चीज ऐसा करके नहीं है. सो आई हैव कंबाइंड ऑल दिस थिंग्स कुछ टुगेदर. ज्यादा ही रैंडमनेस है सर उसमें. हाँ, रैंडमनेस नहीं है, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए लिखा नहीं है. ऐसे ऐसे आप पढ़ोगे ना ऐसे, तो बड़ा ये टफ लगेगा. कहाँ पर कम हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन है, पोटेंशियल का कार्ब ऐसा क्यों है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का कार्ब ऐसा क्यों है. नो हायर इट इज रिटन. सन्याल सर ने लिखने का कोशिश भी किया है, कुछ वहां भी कुछ रैंडमनेस है सर लिखने. हाँ, सो इसलिए जो है क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. I think there is no question, isn't it, Suman? Yes, sir. Yes. So another portion that is left, that is your electrokinetic phenomenon. Now, if you remember this name, electro means electrical field. Obviously, हम लोग electrical field में ही है, क्योंकि clay में negative charge है. Kinetic, kinetic कब आता है? जब there is movement. So electrokinetic phenomenon means जब ये जो clay negative charge है, उसके साथ double layer positive charge cation है, जब move करेगा. So these are part of electrokinetic phenomenon. When two phases move with respect to one another, जब interface में इस electrical double layer रहता है, this is clear. Now this part of the counter ion atmosphere जब movement करेगा, वो double layer का जो arrangement है वो भी move करेगा. So this electrical double layer potential at this plane, that is known as electrokinetic potential and zeta potential. Zeta potential तो last discussion में हम लोग किए हैं, उसके equation भी दिए हैं. Now zeta potential को कैसे measure किया जा सकता है, ये भी एक उपाय है. अगर हम क्ले नेगेटिवली चार्ज से उसके साथ में एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर होगा, देन धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि फोर्स कम होगा, तो इसको अगर हम बाहर का कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड से अटैच करेंगे तब क्या होगा, क्ले इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये दैट विल मूव टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड. और जो काउंटर आयन है सॉइल वाटर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज योर कैथोड. ना इस मूवमेंट को अगर हम कैप्चर करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट को, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट जीटा पोटेंशियल आल्सो. कैसे हम देखेंगे, मान लो फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या किया है, मॉइस्ट क्ले पेस्ट को रखा गया है, ठीक है. उसके बाद इसको बाहर से एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल फील्ड से अटैच किया गया है. पॉजिटिव इज योर कैथोड एंड नेगेटिव इज एनोड. उसके बाद आप रख दोगे, देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज है दैट इज योर कैथोड, उसमें क्या हुआ, एक क्ले पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज टर्बिड.
क्यों क्ले पार्टिकल का मूवमेंट हुआ? क्योंकि क्ले में नेगेटिव चार्ज है. Now, this movement of negatively charged colloidal clay surface under application of electrical field towards your positive electrode, that is cathode, that is anode, this is known as your electrophoresis. Electrophoresis में क्या होता है? Under application of externally applied electrical field, when negatively charged colloidal clay that moves towards positive electrode, that is anode, this is known as electrophoresis. Now electrophoresis का अगर उल्टा अगर हम सोचेंगे, electrophoresis का उल्टा मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं तभी क्ले का मूवमेंट होगा. नाउ किसी भी कारण से अगर क्ले का मूवमेंट होगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का जनरेट होगा बाय एनालॉजी. Yes, sir. Yes. Now your electrophoresis is your suspended charge clay particle move and applied electrical field that was discussed. Now जब मूवमेंट का वजह से पोटेंशियल का जनरेट होगा, that is known as your dawn potential or sedimentation potential or centrifugation potential. This is very important. Just reverse of electrophoresis. This is your dawn potential, sedimentation potential or centrifugation potential. इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें अप्लाई की है, उस पर नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल क्ले पार्टिकल मूव कर रहा है. ठीक है. डाउन पोटेंशियल और सेडिमेंटेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्ले देयर विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. नाउ दूसरा सिस्टम में क्या कि हम क्ले पेस्ट को ग्लास डिस्क लगा के उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन कर दिए, फिर उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ अटैच किए. तो क्ले मूव जब नहीं करेगा तब क्या होगा? जो काउंटर आयन है, कैटायंस जो सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट विल मूव. कहाँ मूव करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड में. दैट्स व्हाई दिस लेवल इंक्रीजेस. ठीक है. तो जब दिस काउंटर आयन व्हिच डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज सॉइल वाटर, मूव्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इज नोन एज योर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. जैसे नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट मूव करता है. Similarly here also under application of electrical field, this counter ion which is present in soil water that moves toward negative electrode, this is known as your electro osmosis. Similarly अगर एक काउंटर आयन वाला पार्ट मूव करेगा किसी भी कारण से, then also there will be generation of electrical field or potential. Okay, and that is known as your streaming potential. Electrical potential is created when a liquid is forced to flow along a charged surface. So these things are important. These are there in society's book also. कभी-कभी confusion होता है. Electrophoresis क्या है? Electroosmosis क्या है? Streaming potential, dawn potential, sedimentation potential, like that. So these things are again important. This comes under electrokinetic phenomenon. So with this is the end of this session. Hello. Here. Yes, sir. Yes, sir. Some of questions that can be asked in SRF or AS examination. Say in last class, clay minerals falls under which silicate category? That we are discussing. So answer will be your phyllosilicate. Then another question is example of boron containing cyclosilicate mineral. Your answer will be tourmaline. Then example of aluminosilicate, well, all oxygen atoms are shared. Means silicon tetrahedral में 4 ऑक्सीजन है तो 4 ही ऑक्सीजन शेयर हो जाएगा. Your answer will be tektosilicate. Okay, now repeating unit of phyllosilicate, Si2O5 2-. This is important. All our clay minerals, they comes under phyllosilicate. Phyllos means sheet type of structure. Now radius range of tetrahedral geometry, that was again it was given this range in last class. Now crystal class of clay mineral, this is your triclinic that we have discussed in last class. Means where A not equals to B not equals to C and alpha not equals to beta not equals to gamma. मिलर इंडिसेस हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं. Which of the following minerals? हाँ, iron containing secondary mineral. Iron containing secondary mineral, obviously your goethite.
Now we are discussing in today's class now, as per Goldsmith law 1, isomorphous substitution, that is 10 to 15% variation is allowed. This question is again asked in JRF or SRF examination. Now coordination number of radius ratio is related with your Goldsmith law 2. This was discussed in last class, taking radius of cation by radius of anion. This type of questions, numerous questions, ये सब पोर्शन से एग्जाम में पूछा जाता है. So these things are very important. You try to understand it. सब टेक्स्ट बुक में है लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन करके लिखा हुआ नहीं है. But after that, if we read, I think you can understand. At the end, I'd like to thank organizers for giving me opportunity and my university. It is Bihar Agriculture University that has provided all facilities for whatever I am doing since my joining to till date. So I am grateful to my university also for providing all facilities for doing my teaching, research, extension and training work. Now over to you, Shuman, if there is any question. Shuman. Yes, sir. Yes, sir. You check chat box if there is any question. Yet no question, sir. Yet there was no question, sir. No question. Thank you, sir. I would like to thank Dr. Neetu Mandal, sir, for giving a very nice lecture on the different topics, that is inorganic and organic colloids, surface charge, characteristics, diffuse double layer, zeta potential, and he has covered all aspects that is important for the ARS examinations and all these competitive examinations. On behalf of the organizers, the course director, I am very thankful for Dr. Mandal sir, Neetu Mandal sir, for giving very nice information as well as sparing a very valuable time for the students. On behalf of all the students, I am very thankful, sir, for giving very nice lecture. Thank you very much, sir. My pleasure, sir. Yes. I don't know how much it will be effective and useful to your student. No, definitely it will be very useful because all these topics, that is स्टूडेंट जो है उनको बहुत हार्ड लगता है ये सब टॉपिक, क्ले मिनरल्स वगैरह जो है, लेकिन आपने जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जीटा पोटेंशियल होता है, न्यूट्रल सॉइल में कैसा है, एसिडिक सॉइल में कैसा है, अल्कलाइन सॉइल में क्या कैसा है, तो डेफिनेटली उनको सब समझ आ गया होगा सर. And definitely this lecture will be very informative for them. Sir, in to yesterday's meeting with society's headquarter, हमको पता चला next annual convention आप लोग organize कर रहे हो उधर? Yes, sir. We are organized. You are welcome for that convention, sir. So advance congratulations and best wishes. Yes. I am the treasurer for that Rahuri chapter of Indian. Oh, lovely. So this is my one advantages that पहले से आपके साथ इंटरेक्शन हो गया है. बहुत आपसे अभी तो मिल ही गए हैं, फिर एक्चुअली मुलाकात के टाइम में और खुशी होगी सर. डेफिनेटली. Yes. You are welcome for that function, sir. Okay, sir. Thank you for giving me this opportunity. I would like to thank your university administration, your head of department, as well as faculty members, organizers, for giving me this opportunity. Thank you, sir. Yes, our head of department, Dr. B.D. Bhakre, actually want to talk with you and make the dialogues, but due to some important meeting, he is engaged from yesterday till now. Okay. But definitely he will contact you on phone and definitely make the vote of thanks, sir. And especially, I would like to mention my student Shuman. Yes. He is the key person actually. Otherwise, contacting with you, this was not possible. So Shuman, thank you. Thank you, sir. सर आपसे मैं ऐसे भी सर मैं चाह रहा था कि सारे लोग बेनिफिट्स हों, कि हमारे पास अलग अलग जगह पे अलग अलग टीचर्स हैं,
लेकिन होता क्या है कि सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, कि जो हमारा चैप्टर था हमने आपको जो अलॉट किया था सर, वो इसलिए किया गया था कि हम जानते थे कि ये चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो सबको फायदा होगा एक साथ। और हमको लगता है मोस्ट ऑफ दी लोगों का जो हमको जो फीडबैक मिला है सब बहुत खुश थे इससे। और लोगों ने, अगर मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कुछ बोलना है, स्टूडेंट्स कुछ जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा लगा तो आप कुछ बोल सकते हैं सर को फीडबैक के लिए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बोल सकते हैं। राम। थँक्यू सर. तुमच्या या विचाराबद्दल धन्यवाद सर. आणि तुम्ही जे डीप मध्ये जे नॉलेज दिलं सर, Nilesh, please Yes, speak in yes. Hindi. थैंक यू सर. आपका ये जो लेक्चर हुआ हमारे को आप मोटिवेट करेगा. और सर ये आपका लेक्चर बहुत अच्छा था. थोड़ा हार्ड गया पर मेरे हिसाब से हम्म, मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो हम्म. मैं ट्राई करूंगा आपके और लेक्चर अटेंड करने के लिए. और मेरे को आपने जो ज्वाइन किया था इसलिए मैं थैंक यू बोलता हूँ. और सर मेरी आपके लिए एक रिक्वेस्ट है सर कि हमारे पास जो स्टडी मटेरियल रहता है वो थोड़ा अब इतना स्टैंडर्ड नहीं रहता है कि जो एग्जाम के लेवल के लिए पढ़ाई कर सकते Yes, हैं. yes, yes. Nay, you will be getting all the standard material for me. I have shared this PPT with Suman, as well as I will share today's PPT also. Don't worry, you will be getting. See, these portion are basically these are core of soil chemistry. Yes, yes. Typically, Yes, these sir. are hard portion, but gradually you try to understand it. And afterwards also, if you wish, you are welcome. You can interact with me in afterward also, no problem. Okay. Thank you, sir. Anybody from participants who want to make thanks? Okay, thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, thank you. सर हम लोग एक्चुअली मैं भी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही यूजी है मेरा सर. और मैं अभी फिलहाल जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहा हूँ सर. Okay. सर हम लोग जेआरएफ प्रिपरेशन में सर के साथ जुड़ चुके हैं सर. तो सर आपने काफी लॉजिकली एक्सप्लेन किया सर. Sir, Suraj is my batchmate, sir. Actually, Yes, sir. I am yes, sir. You are, I am recognizing Sir. you. या आपने So सर you are जो at Junogad. यस सर जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. Okay, okay, that's nice. सर नेट का पेपर सर प्रीवियस ईयर के वो मेमोरी बेस्ड ही मिलते हैं सर. तो उसमें प्रॉब्लम आती है सर. और एसआरएफ जो प्रीवियस 1-2 ईयर के पहले वाले पेपर है उसमें प्रॉब्लम आते हैं सर. वो अवेलेबिलिटी कहाँ पे होंगे सर अगर रेफरेंसेस हो? देखो, see, these sort of things are available in I think IRI, obviously in IRI. Suman, have you contacted with these two scientists जो आपसे बात हुआ था? यस यस सर, मैंने बात किया है उनसे सर. उनके क्लास के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है. वो क्लास ले रहे हैं सर. और मैं उनको एक क्लास के लिए और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस केमिस्ट्री के लिए सर, स्पेशली सर उनसे. तो आज शायद हो सकता है मैं सामने बात करता हूँ उनसे सर. सर ह्यूमस किसकी बात हुआ? आबिर दे? हाँ, आबिर डे सर से. और अच्छा, नहीं सर, जबरदस्त है. कभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन देवारूप दास सर जो है ना, उन्होंने कंफर्म कर दिया है डेट भी. और मैं जल्दी उसको शेड्यूल करता सर. हाँ, why I am saying that as because जो IRI का जो साइंटिस्ट है ना, ये जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ये सब अवेलेबल है उनके पास. अदरवाइज ये सब मेरा जूनियर है, हम अवेलेबल करा सकते हैं उनसे लेके. बट डायरेक्टली अगर वो लोग क्लास लेगा तो ये we can get from them also. ओके ओके सर. ओके सर. So this was Definitely we will give him his lecture. yes, yes. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you very much, sir, for Thank sparing you. your valuable time. It's my pleasure always. इसके बाद भी सुमन अगर कोई स्टूडेंट इंटरेक्ट करना चाहेगा, कोई डिफिकल्टीज होगा तो भी हमको व्हाट्सएप करना. ओके सर. ओके सर. Yes, sir. Okay sir, so I am leaving this meeting. Yes, thank you very much. थैंक यू.